Hello my dear students, I am Deepak Vanjani. Last time we have studied about series and parallel connection of capacitors. Now we will solve some numericals related to it. First, let us solve exercise numerical number 2.5. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. Parallel plate capacitor is given to us, and when there is air between two plates of capacitor, at that time value of capacitance is 8 picofarad. Here I have taken one parallel plate capacitor having area A and separation between two plates of capacitor is D, and there is air between two plates of capacitor, and we know the formula of capacitance of parallel plate capacitor, that is epsilon naught A by D. So that value of capacitance is 8 picofarad given to us. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? अब ये distance को half कर दिया जाए. If the separation between two plates is made half, then what will be the capacitance that we have to find? So now in this figure, separation between two plates is made half, that is D by 2, and the space between them is filled with a substance. The space between two plates is filled with a substance, that is some insulating material of dielectric constant 6. Value of dielectric constant is given to us, that is nothing but K. Value of K, that is 6. When there is a dielectric material between two plates of capacitor, at that time formula of capacitance is K epsilon naught A upon separation between two plates. What is the separation between two plates right now? That is D by 2. So finally the capacitance will be K epsilon naught A upon D by 2. Denominator, numerator. So K into 2, 6 into 2 into epsilon naught A by D. 6 2 ja 12. What is epsilon naught A by D? That is 8 picofarad. So instead of epsilon naught A by D, we can write 8 picofarad. 12 8 ja 96. So finally the capacitance will be 96 picofarad when distance between two plates is made half, and when the space between two plates is filled with some substance having dielectric constant 6. At that time capacitance is 96 picofarad. Now we will solve exercise numerical 2.6. Three capacitors, each of capacitance 9 picofarad. Three capacitors are given, C1, C2, C3, having value 9 picofarad, are connected in series. So C1, C2 and C3 are connected in series. What is the total capacitance of the combination? Here C1, C2 and C3 are connected in series. C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C, that is nothing but 9 picofarad. And we know the formula of effective capacitance when capacitors are connected in series. Here three capacitors are connected in series. Therefore equivalent capacitance is 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. C1 that is 9 picofarad, C2 9 picofarad, C3 9 picofarad. 1 upon 9 plus 1 upon 9 plus 1 upon 9, that is 3 upon 9. 3 3 ja 9. So this will be 1 upon 3. 1 upon Cs is equal to 1 upon 3. Therefore total capacitance of the combination is 3 picofarad when three capacitors are connected in series. Okay. In second part, What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply?
Now this combination of three capacitors is connected to 120 volt supply. Now the potential difference between these 2 points A and B is 120 volt. Therefore we can say total potential V1 plus V2 plus V3 is equal to 120 volt. But C1 is equal to C2 is equal to C3. It means value of capacitance is same for all three capacitors. If value of capacitance is same, then potential difference, what about the potential difference? We know that in series combination charge of the capacitor will be same. If charge is same, capacitance is same, then potential V1 must be equal to V2 must be equal to V3. This potential must be same if all these three capacitors are having same capacitance. If value of capacitance is same, charge is same, then potential will be same. From the formula of capacitance, C is equal to Q by V, then V is equal to Q by C. Q is same, C is same, then potential will remain same. So we can say V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V by 3. What is V? That is 120 volt. So 120 divided by 3. 3 4 are 12, so 40 volt. Here potential difference will be 40 volt, 40 volt and 40 volt. Total potential difference will be 120 volt. So potential difference across each capacitor is 40 volt. Now let us solve exercise numerical 2.7. Three capacitors of capacitance is 2 picofarad. Value of capacitance is given to us 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad. C1, C2 and C3 are connected in parallel. C1, C2 and C3 are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? These three capacitors, 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. Already we have studied the formula for parallel combination of capacitors. That is for 3 capacitors C1 plus C2 plus C3. So effective capacitance is C1 plus C2 plus C3. 2 plus 3 plus 4, that is 9 picofarad. So total capacitance of the combination is 9 picofarad. Now in next part what they are asking, determine the charge on each plate if the combination is connected to a 100 volt supply. If this combination is connected to 100 volt supply, then what is the charge on each plate of the capacitor, that we have to find. What is the speciality of parallel combination? In parallel combination, potential difference will be same for all these capacitors. It means here potential difference will be 100 volt, here potential difference will be 100 volt, here potential difference will be 100 volt. And they are asking us to find charge Q1, Q2 and Q3. For parallel combination, potential difference is same. Therefore charge on first capacitor is Q1 is equal to C1V. That is C1. What is the value of C1? We know the formula of capacitance, C is equal to Q by V. Therefore Q is equal to CV. So C1V. So C1V, what is the value of C1? 2 picofarad. So 2 into 10 raised to minus 12 into potential difference. Potential difference, that is 100 volt. So into 100. 100 is nothing but 10 raised to 2 minus 12 into 10 raised to 2. Minus 12 plus 2, 10 raised to minus 10.
So it can be written as Q1 is equal to 2 into 10 raised to minus 10 coulomb. Q2, charge on the second capacitor, that is C2V, that is nothing but 3 into 10 raised to minus 12 into 100, and that is 3 into 10 raised to minus 10 coulomb. Same way, Q3 is equal to C3V. What is the value of C3? 4 picofarad. Pico means 10 raised to minus 12. 4 into 10 raised to minus 12 into 100. So charge on third capacitor is 4 into 10 raised to minus 10 coulomb. Now we will solve exercise numerical 2.8. In a parallel plate capacitor with air between the plates, parallel plate capacitor, and there is air between these two plates. Each plate has an area of 6 into 10 raised to minus 3 meter square. Area is given to us, that is 6 into 10 raised to minus 3 meter square. And the distance between the plates is 3 millimeter. Distance between two plates, that is 3 millimeter. 3 into 10 raised to minus 3 meter. Calculate the capacitance of the capacitor. क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं? Capacitance of the parallel plate capacitor. What is the formula of capacitance of parallel plate capacitor? Epsilon naught A by D. For parallel plate capacitor, formula of capacitance is epsilon naught A by D. When there is air or vacuum, at the time we can use epsilon naught A by D. What is the value of epsilon naught? 8.85 into 10 raised to minus 12 into area, that is 6 into 10 raised to minus 3 upon D, 3 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 will get cancelled. 3 to ja 6. So 8.85 into 2, that is 17.7 into 10 raised to minus 12 farad. That can be nearly written as 18 picofarad. 17.7 can be written as 18 picofarad. So value of capacitance is 18 picofarad. Okay, capacitance of the capacitor तो मिल गया. Next, if this capacitor is connected to a 100 volt supply, कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर लो? 100 वोल्ट सप्लाई से. जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही चार्ज होगा, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? अगर चार्जिंग हो रहा है तो वो पूछ रहे हैं कि क्या चार्ज रहेगा ये प्लेट्स के ऊपर. व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट? एक के ऊपर रहेगा प्लस क्यू, एक के ऊपर रहेगा माइनस क्यू. हमको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है. सो what is the formula of capacitance? What is the formula of capacitance? C is equal to Q by V. Therefore Q is equal to CV. चार्ज फाइंड करना है तो क्या लगाएंगे? Q is equal to CV. C कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर लिया है और सप्लाई क्या दिया है? 100 वोल्ट. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. व्हेन कैपेसिटर विल गेट चार्ज, एट द टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी सेम, 100 वोल्ट. सो Q is equal to CV. C हमको क्या मिला? 18 इंटू 10 raised to minus 12 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 100. सो 18 इंटू 10 raised to minus 12 इंटू 100 क्या बनेगा? 18 इंटू 10 raised to minus 10. सो दिस कैन बी रिटन एज 1.8 इंटू 10 raised to minus 9 coulomb. सो चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज 1.8 into 10 raised to minus 9 coulomb. Now we will solve example 2.9. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के हो गए. अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 2.9. अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर is connected to a 500 volt supply as shown in figure. 4 capacitors are given, C1, C2, C3 and C4. All are having same value of capacitance, that is 10 microfarad. And these 4 capacitors are connected to a 500 volt supply.
Determine the equivalent capacitance of the network. First, they are asking us to find equivalent or effective capacitance of the network. It means we have to check which capacitors are in series and which capacitors are in parallel. Second, the charge on each capacitor. What is the charge on C1, C2, C3 and C4, that we have to find. Value of C1, C2, C3 and C4, that is same, 10 microfarad. First we have to find equivalent capacitance. From this figure it is clear that C1, C2 and C3 are in series. This is first plate, that is positively charged, and this will be negatively charged. So this is first plate, this is second. This is first plate, this is second. This is first plate, this is second. So you can see here, second plate of first capacitor is connected with first plate of second capacitor. Second plate of second capacitor is connected with first plate of third capacitor. Therefore this C1, C2 and C3 are in series. This is the equivalent circuit or network. C1, C2 and C3 are in series. आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. C1 का डायरेक्ट कनेक्शन C2 के साथ, C2 का डायरेक्ट कनेक्शन C3 के साथ. तो C1, C2, C3 आर इन सीरीज. अगर देखा जाए तो दिस इज A, ये हो गया B, तो ये हो गया B. फिर बिटवीन B एंड C व्हाट इज देयर? C2, तो यहाँ पे B ले लो, यहाँ पे C. बिटवीन B एंड C व्हाट इज देयर? C2. यहाँ पे क्या है? C एंड D, तो बिटवीन C एंड D यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लगा सकते हैं, ये बनेगा B, ये बनेगा C और ये बन गया D. बिटवीन B एंड C C2, बिटवीन C एंड D C3. करेक्ट? So we can say that C1, C2 and C3 are in series. C4 जैसा है वैसा का वैसा रखा. C4 किसके बीच में? A और D के बीच में. तो C4 की फर्स्ट प्लेट किसके साथ कनेक्शन में है? A के साथ. और C4 की सेकंड प्लेट किसके साथ कनेक्शन में है? D के साथ. एंड बिटवीन A एंड D व्हाट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर? 500 वोल्ट. तो ये हो गया 500 वोल्ट. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन. C1, C2 and C3 are in series and effective capacitance C dash of these three capacitors is. मान लो कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बने? C dash. क्या बना? C dash. And we know the formula of capacitance in series when capacitors are connected in series. That is reciprocal of equivalent capacitance. Reciprocal of equivalent capacitance is sum of reciprocal of individual capacitances. Reciprocal of equivalent capacitance, that is C dash 1 upon C dash is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Okay. C1 क्या बना? C1 क्या बना? 10 माइक्रोफेरेड. C1 दिया हुआ है 10 माइक्रोफेरेड. C2 भी 10 माइक्रोफेरेड और C3 भी 10 माइक्रोफेरेड. 1 upon 10 plus 1 upon 10 plus 1 upon 10, that is 3 by 10. 3 by 10 is nothing but 1 upon C dash, but we are interested in equivalent capacitance or effective capacitance C dash. So C dash is equal to 10 by 3 microfarad. So effective capacitance of these three capacitors is C dash and its value is 10 by 3 microfarad. चलो इसका काम हो गया. C1, C2, C3 का काम हो गया. वो क्या मिल गया हमें? C dash. C dash and C4 are in parallel. यहाँ पे देखो मैंने इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क दिखाया हुआ है. इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? आप C1, C2, C3 को रिप्लेस कर सकते हैं C dash के साथ. तो C1, C2 and C3 are replaced by effective capacitance C dash and C dash and C4 are in parallel because
if we think of one capacitor, then first plate is connected to A and second plate will be connected to D. ये हो गया. So C dash and C4 are connected between two same points. Therefore we can say that C dash and C4 are in parallel. From figure it is clear that C dash and C4 are in parallel. जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डायरेक्ट समेशन. तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस, अब C1 C2 C3 इसमें आ गए, ये C4 आ गया, तो मतलब टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस टू C डैश प्लस C4. C डैश हमें क्या मिला? 10/3 माइक्रोफेरेड और C4 की वैल्यू हमें मिली हुई है, कितनी है? 10 माइक्रोफेरेड. 10/3 प्लस 10 दैट इज नथिंग बट 40/3. 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 40, 40/3 माइक्रोफेरेड. 40/3 दैट इज नथिंग बट 13.3. सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 13.3 माइक्रोफेरेड. So in first part the equivalent capacitance of the network is 13.3 microfarad. This is the answer. Now we will solve second part, that is the charge on each capacitor. बैटरी कनेक्ट की है तो चार्जिंग होगा और सबके ऊपर चार्ज आएगा. तो what is the charge on each capacitor that we have to find. From figure C dash and C4 are in parallel. From last figure C dash and C4 are in parallel. And what is the speciality of parallel connection? Potential difference will remain same in parallel connection for all the capacitors connected in parallel. In second part they are asking us to find charge on each capacitor. हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो फाइंड करना है. तो पहले हम फाइंड करेंगे C डैश के ऊपर चार्ज कितना है और C4 के ऊपर चार्ज कितना है. अगर C डैश पे चार्ज मिल गया तो ऑटोमेटिकली C1 C2 C3 पे मिल जाएगा, बिकॉज C डैश इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ C1 C2 एंड C3 एंड C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. एंड इन सीरीज कनेक्शन व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ सीरीज कनेक्शन? चार्ज ऑन ईच प्लेट विल बी सेम इन सीरीज कनेक्शन. मतलब हर एक प्लेट पे चार्ज सेम होगा. एक प्लेट पे होगा प्लस क्यू तो दूसरी पे होगा माइनस क्यू. जितना चार्ज C1 पे होगा उतना ही C2 पे होगा, उतना ही C3 पे होगा, और जितना चार्ज C1 C2 C3 पे होगा उतना ही इफेक्टिव कैपेसिटेंस C डैश का होगा. मतलब एक बार C डैश का चार्ज हमें मिल जाए तो C1 C2 C3 का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. याद करो सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन में जो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए थे उनका जो चार्ज था और इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाई थी जो CS था उसका भी चार्ज सेम ही था. मतलब एक बार C डैश का चार्ज मुझे मिल जाए तो C1 C2 C3 का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. पोटेंशियल विल बी सेम. सो फॉर C1 C2 एंड C3 हमें एक ही का चार्ज फाइंड करना है. किसका? C डैश का. C डैश का मिल गया मतलब मान लो कि C1 C2 C3 का हमारे पास है. तो एक बार पहले C डैश पे आ जाते हैं. C डैश इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? चार्ज अपॉन पोटेंशियल. मान लो कि C डैश के ऊपर चार्ज कितना है? पहली प्लेट के ऊपर मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू, सेकेंड के ऊपर मान लेता हूँ मैं माइनस क्यू. तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ C डैश? दैट इज प्लस क्यू. मुझे बताओ क्या पैरेलल कनेक्शन में चार्ज सेम होता है क्या? नहीं. पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल. तो इसका चार्ज प्लस क्यू है तो C4 का प्लस क्यू तो होने वाला नहीं है. मान ले कि इसका चार्ज क्या है? क्यू डैश. इसका चार्ज क्या है? माइनस क्यू डैश. करेक्ट. सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम. तो C डैश इज इक्वल टू चार्ज क्या माना? क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया हुआ है 500 वोल्ट, दैट इज V. हमारा इंटरेस्ट किस में है? चार्ज में. तो चार्ज को सब्जेक्ट बना. Q इज इक्वल टू C डैश V.
सी डैश हमारे पास है, कितना मिला सी डैश? 10/3 माइक्रोफेरेड। 10/3 माइक्रो मतलब कितना? 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 500 वोल्ट, तो 500 हियर 10 इंटू 500 दैट इज 5000। 5000/3 इंटू 10⁻⁻6 it can be written as 5/3 into 1000 into 10⁻⁻6, 1000 that is 10⁻3, 3 minus 6 minus 3, so it can be written as 5/3 10⁻⁻3। और यहाँ पे देख 5/3 सीधा लिख दो, 10 into 100 1000, 1000 is nothing but 10⁻3, 3 minus 6 minus 3, तो 5/3 into 10⁻3, what is the value of 5/3? that is 1.7। so charge on C1, C2 and C3 is 1.7 into 10⁻3 कूलम। सी डैश का जो चार्ज है वही C1, C2, C3 का होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका चार्ज क्या रहेगा? +Q -Q। यहाँ पे भी क्या रहेगा? +Q -Q। यहाँ पे भी क्या रहेगा? +Q -Q। ये चार्ज क्या मिला? 1.7 इंटू 10⁻3 कूलम। C1, C2 और C3 का काम हो गया। अब आते हैं C4 पे। फॉर C4 के लिए देखो, फॉर C4 चार्ज क्या कंसिडर किया मैंने? Q डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके लिए भी 500, इसके लिए भी 500, तो C4 इज इक्वल टू Q डैश अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा इंटरेस्ट है चार्ज, C4 पे कितना चार्ज है? तो C4 पे चार्ज कितना है? Q डैश। Q डैश इज इक्वल टू C4V। C4 कितना मिला? C4 तो हमको दिया हुआ था, कितना था? 10 माइक्रोफेरेड। 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 500। सो इट कैन बी रिटन एज 5000 इंटू 10⁻⁻6। 5000 इंटू 10⁻⁻6 इज नथिंग बट 5 इंटू 10⁻3 कूलम। सो चार्ज ऑन C4 is 5 into 10⁻3 coulomb, and here charge on C1, C2 and C3 that is 1.7 into 10⁻3 coulomb। यहाँ पे देख लो पैरेलल कनेक्शन में दोनों का चार्ज डिफरेंट आया, एक का है 1.7 into 10⁻3 और एक का है 5 into 10⁻3। पैरेलल कनेक्शन में चार्ज डिफरेंट, पोटेंशियल सेम। सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.9। आई होप आज आपको एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें। ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स 2 to 3 टाइम्स। जैसे ही आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सवाल आसान लगेंगे। थैंक यू।